हेलो जी सारे प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब नमस्कार। थोड़ा जिहा मेरा आई थिंक वीडियो की प्रॉब्लम आई है ते मैं ट्राई कर रहा हूं फिक्स कर दी तो कोई मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ जी अभी म्यूट हो गया हरजीत जी। ਉਸਤਾਦ ਵਿਲਾਇਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਵਿਲਾਇਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸਤਾਦ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਰੂਪਾ ਪਨੇਸਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕਵਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਬ ਅਕਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਇਲ ਪਟੇਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਜਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਰਬ ਅਕਾਲ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। बहुत मेहरबानी। सारे सुनने वालियां नू श्रोता जनों को नमस्कार आदाबर्स। Hello to everyone who've joined us today on this day when we are remembering the great Ustad Vilayat Khan Sahib, the AFTAABE SITAR, the man who transformed sitar that today there is hardly anyone in the world of sitar who has not been impacted by this great maestro. Ustad Vilayat Khan Sahab was my Ustad, and I was very fortunate to have spent time with him in India and when he came to England. So I'm hoping that through some of the things I remember with my interactions with him as my Ustad, as my mentor, that we will remember this iconic sitar player. And I'm so happy that with me, assisting me and remembering Ustad ji is Roopa Panesar on sitar and Kaviraj Singh, who will today input through his voice, remembering Ustad ji. Ustad Vilayat Khan Sahab was part of a lineage, a family of musicians who have absolutely charted the course of sitar playing in the Indian subcontinent. His father, Ustad Inayat Khan Sahib, his grandfather, Ustad Imdad Khan Sahib, and his forefathers beyond that form, by the time of Ustad ji, sixth generation, and through his son, Ustad Shujat Hussain, is the next generation still very much alive and kicking. His younger son, Hidayat Hussain, and his daughter Zila Khan are carrying on the legacy along with उनके शिष्य और उनके students के students, probably even more generations down the line, are carrying the beauty of his music in our hearts and cherishing the beautiful sounds he gave to sitar. And he changed the sound of the sitar by doing certain experimentation, which was quite revolutionary at the time, but it just created a soundscape which was not present in the pre-Ustad Vilayat Khan Sahab era of sitar playing.
So I think it'd be appropriate to, as we are in the spring season, though in England it's raining at the moment, but nevertheless we are seeing flowers blooming. Uh, it'll be appropriate to start off with a composition my Ustadji composed, penned, based on the names of the flowers in Rag Gavti. So let's start off with invoking the music of Ustadji, and I'll invite Kaviraj Singh to sing the composition, and then I'll ask Roopa to echo that on the sitar in her own way. Ustadji, say. The Arana चंदन फुलवन कडारो हरवा चंदन फुलवन कडारो हरवा सुंदर सुरजन सावरिया बलमा तोरे लागो लागो तोरे गरवा चंदन फुलवन कडारो हरवा चंदन फुलवन कडारो जो हो करम नाथ तुम्हारी हम पर जो हो करम नाथ तुम्हारी हम पर चरण चरावो से दीदो नाम रवा चंदन फुलवन कडारो हरवा चंदन फुलवन चंदन फुलवन कडारो हरवा वाह, क्या बात, बहुत खूब जी, बहुत खूब, क्या बात है। वाह, वाह जी वाह, क्या बात, बहुत ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਰੂਪਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆਪਾਂ ਗਾਇਨ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
नाराज हैगा, कोई गल नहीं। पायल जी, मैं थोड़ा जिहा रिक्वेस्ट करांगा पायल जी नूं कि पायल जी अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो थोड़ा सा उस्ताद जी के बारे में और रूपा जी थोड़ा वेलकम कीजिए सर्वकाल की तरफ से। तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए, चलो कोई बात नहीं, तो आइए और थोड़ा सा जरूर अपना शेयर कीजिए। बिल्कुल। नमस्ते उस्ताद जी और नमस्ते रूपा एंड कविराज। सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी की तरफ से आप सबका सर्वकाल लाइव पे स्वागत है। हम सभी दर्शकों को और सुनने वाले को जो हमारे साथ आज जुड़े हैं उनको भी वेलकम करते हैं सर्वकाल की तरफ से। थैंक यू सो मच. Kaviraj, that was a beautiful song, and Rupa, you presented it in sitar just as beautiful. And what a way to start our conversation. It was quite pleasant to listen to both of you. So thank you so much. And Ustadji, I'm looking forward to this conversation about great artist, Ustad Vilayat Khan Sahib, and I never had a privilege to meet with him or see him live. But listening to you, I'm sure I'm going to get that experience today. So I'm looking forward to that. So welcome to all of you to our Surbakal Live today. Thank you very much. जी उस्ताद जी। As you've seen, you heard that the composition, the way it has been composed, you can see that it was actually made by a sitar player. Ustadi's compositions naturally were thought and made so that they could be played on the sitar beautifully. And in this composition, you saw that he has used the tan, the movement, which is so beautiful and appropriate to Rag Gavti. My Ustad used to say that for a sitar player, naturally, as a sitar player, he would say that we have a great advantage because when we listen to music, we listen to vocal music, we can really translate that or notate the music onto our frets. जो पर्दे हैं उस पे हमको म्यूजिक दिखाई देता है और with the pulling we can know how the movement is formed. So my ustad was a great analytical person who analyzed vocal compositions which he had gathered from various ustads of the time. He was particularly very fond of Ustad Abdul Karim Khan Sahib, the Kirana maestro, whose his expression and the soul and the way he sang was something Ustad ji used to imbibe in his expression. अपनी सितार में वो जो भावना, एक आत्मा की पुकार का जो एक अंदाज था उस्ताद अब्दुल करीम खान साहिब का, वो उस्ताद जी उसको पकड़ते थे. और I remember when he was with us in England for his heart operation and he was after the operation resting, तो वो यही बोलते थे कि बेटा get me some recordings of Ustad Abdul Karim Khan Sahib and Ustad Fayaz Khan Sahib. So these iconic vocalists were in his thinking and he had somehow molded the expression and particularly this pukar, this cry of the soul, which he brought about in his pulling, in his mean, that his sitar sang. Khan Sahib की सितार ऐसा लगता था कि उनकी सितार गा रही है. He sang through his instrument. And it was because of that Ustad ji got the credit of bringing about the gaiki ang, the vocal style of playing the sitar. It is not, Ustad ji खुद बोलते थे कि ये
बात नहीं है कि दूसरे लोग जो हैं उनके प्री सीनियर म्यूजिशियंस उन्होंने गायकी नहीं बजाई. Particularly he used to mention Ustad Abdul Aziz Khan of Patiala, the batte wali bean, the slide bean he used to play, जिसको हम आजकल विचित्र वीणा बोलते हैं. And he used to say that, beta, I have seen that man play, and the beauty of the vocal music in his playing was something he was very inspired. So उस्ताद जी ने नाम naturally सितार में जो उन्होंने करके दिखाया, the way he did it, it became his stamp. Many people, I'm sure, because vocal music has always been the bedrock of our music, and sitar players, sarod players, अलग-अलग हमारे North Indian musical instruments players take a lot of ideas from the vocal compositions of olden days, whether it's the Dhrupad style or even pre-Dhrupad style, Prabandh Gaiki, and then moving on to different styles and all, and then they would give it the composition shape, जिसको हम गत बोलते हैं. So these guts were also shaped on a stream of music which comes through us through this wealth of musical movements. And we are remembering this great Ustad who was born on the 28th of August 1928. बताते हैं कि कृष्णा जन्माष्टमी थी उस दिन. And he, after a span of 75 years serving the world through his music, he left us on the 13th of March 2004. So आज उनकी याद में हम बैठे हैं और उनकी एक और कंपोजिशन देखते हैं जो आप देखेंगे कि अगेन in this composition you can hear that कि सितार की जो मूवमेंट है वो आपको सुनाई देगी. तो I'm going to request कविराज कि अगर कविराज आमोद की बंदिश उस्ताद जी की, if you can present that, and you can extend the composition a little bit if you feel like. अंग अंग नाच रयो मोरा, अंग अंग नाच रयो मोरा, पिया के आवन की सुनत खबरिया. अंग अंग नाच रयो मोरा, अंग अंग नाच रयो मोरा. जब के नाथ गए विदेश सुध न रही, तन मन और के सेवा की, अवन की सुन संदेश, भोर भोर हम उठा के सवरी सवरिया. अंग अंग नाच रयो मोरा, अंग अंग नाच रयो मोरा, पिया के आवन की सुनत खबरिया. अंग अंग नाच रयो मोरा, अंग अंग नाच रयो मोरा, अंग अंग नाच रयो. अंग अंग
अंग नाच रयो मोरा पिया के आवन की सुनत खबरिया अंग अंग नाच रयो अंग अंग नाच रयो अंग अंग नाच रयो मोरा Wow, beautiful. वाह जी वाह, क्या बात। अंग अंग नाच रहो मोरा पिया के आवन की सुन खबरिया. My beloved is coming and my whole body, my each cell is dancing. So it was the dance, the movement predicted the dance, happiness, the वाह joy through Rag Kamod. The एक उस्ताद, एक माइस्ट्रो की निशानी ये ही होती है कि जो उनकी सोच रहती है वो बहुत ऊपर की सोच होती है. तो क्या बात। इसमें उस्ताद जी वर्ड्स शब्द भी खुद लिखे उन्होंने और फिर उसको जो उन्होंने कंपोज किया, तरतीब दी. तो दिस कैन नॉट हैपन विदाउट द him actually digesting the music of the great ustads he used to talk about, he used to mention with great love. Ustad Fayaz Khan Sahab was again one of his favorite musicians, vocalists, and he used to admire the lord-like royal character of this man, Ustad Fayaz Khan Sahib. His वाह voice also, बहुत बड़ी आवाज में वो जब गाते थे, बताते हैं, my ustad used to tell me कि बेटा, when he used to come to the palace, he would be coming on a very special carriage जो उनको महाराजाओं के जैसे, लॉर्ड्स के जैसे लेके आते थे, और उनकी जो छड़ी होती थी उसके ऊपर ही had a diamond. So when he came, ऐसे लगता था जैसे एक, you know, there's a big something entering the palace. और वाह लेकिन what was beautiful in Ustad Fayaz Khan was that though his voice was so heavy, the Agra sort of style of singing, but the compositions, the lyrics were very playful. बहुत ही छेड़छाड़, बड़े रोमांटिक अंदाज की compositions होती थी, जो जब when my Ustad ji kind of compose and do that, I am quite sure that Fayaz Khan Sahab's ideas and things were actually working through him. तो और दूसरी चीज फयाज खान साहब की जो थी वो उनकी सितार में अक्सर सुनाई देती है, that is that again the puकार, the kind of call, that effect he used to create. तो मुझे याद है मैंने उस्ताद जी को कहा कि मैंने उस्ताद जी आप अपने बजाने में how do you create this variety कि you don't allow कि आपका म्यूजिक जो है वो बोरिंग नहीं होता, how do you maintain that? कह लगे बेटा ऐसे है कि मैं सोचता हूँ उसका, और वो जो फ्रेज होता है उसके पीछे मैं देखता हूँ कि क्या भावना है, क्या भाव है, और एकदम से मैं अगर मैंने बहुत लाड और प्यार से कुछ किया, you know, my playing is depicting very romantic, very loving, very you know, playfulness in that, he would make sure that doesn't carry on very long, and then he would give a pause, और pause के बाद he would totally change the atmosphere. तो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल देके बताया कि बड़ा देखो राग तोड़ी में जो है रे गा रे सा का जो पॉइंट रहता है उसमें इस ढंग से मैं ले लेता हूँ उसको, जैसे someone's holding the neck from here, and he's really kind of making that kind of gestures to and that's what he says I create, and I work my technique in a way कि वो जो इफेक्ट है उसका एकदम से एकदम सुनने वाले जो हैं they get on the seats. And I think the thing I'm trying to point out is that he was a man who had transcended beyond just the notes, beyond the technicalities. He was in another space
जहाँ पे he could give enter another dimension of music and bring another layer of aesthetics into his playing. तो जब उनको किसी ने someone interviewed him to ask him विलायत खान साहब को कि what makes your sitar so why different, what is different, so he says that there are many good sitar players, and they are all fantastic, they are that, but maybe my sitar is more emotional. वाह And I think that to me said it all कि वो emotional जो था उनकी जो सितार के अंदर वो जो भावना थी, what he brought that another layer into his playing that made it so beautiful. And I think let's invoke वाह another angle and maybe ask Roopa to share with us some breath of Ustadji which she loves. Roopa, tell us what you're going to be sharing. क्या बात I was thinking to play a composition in Rag Bihar. I'm tuned there, so I would just like to play this Drupka, which is quite dan based. वाह 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 Wow. Thank you. वाह जी वाह रूपा क्या बात बहुत Wow. खूब Beautiful. बहुत अच्छे ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਤਾਰ ਦਾ ਵੋਕਲ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਵਿਲਾਇਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਵਿਲਾਇਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਿਤ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਤਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ आज का प्रोग्राम तुहाडे सामने लेके आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सर्व अकाल लाइव प्रोग्राम में आप सब लोग बड़े प्यार के साथ जुड़े हुए हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि अभी अभी एक हमारे बहुत ही प्यारे पाकिस्तान से अख्तर फकीर साहब ने बड़ी प्यारी एक लाइन लिखी है
पंजाबी दी लाइन है, तुसीं सारिਆਂ ने कवाली सुनी होगी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब दी, यादां विछड़े सज्जण दियां आईयां अखियां चों मींह वसदा। ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਵਲੈਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸੇਜਲ ਹਨ, ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਛੜੇ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਬ ਅਕਾਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਬ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਜਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰਬ ਅਕਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜੋ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਜਸ ਤੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ YouTube ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਿਤਮਾ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਅਖਤਰ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਜੇਮਸ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਮਾ कपूर जी, अख्तर फकीर साहब, पिंकी कौल मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम उदार भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साढ़े बहुत ही प्यारे ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ਨੂੰ प्रमोट करने वाली शख्सियत जे वासुदेवा जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम निकाला इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता गर्व कामर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने दो तीन दिन पहले ही सुजाता जी को इसी प्रोग्राम में लाइव सुना है। बहुत अच्छा क्लासिकल वोकल लगाती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। साढ़े हमारे जे विश्वदेवा जी ने लिखा है कि उनकी मेमोरी उस्ताद विलायत खान साहब के साथ कैसी रही, उस्ताद धर्मवीर जी के साथ, तो बहुत प्यार के साथ उन्होंने लिखा है अपनी याद। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, भाई निर्मल सिंह जी सूरा ਅਤੇ अंकिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता जी जुड़ी हुई हैं इस प्रोग्राम के साथ। शुभांगी मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुवैत से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, तो USA से, कुवैत से और ऑस्ट्रेलिया से, अलग अलग देशों से लोग बहुत ही प्यारे इस प्रोग्राम को आशीर्वाद देने वाले जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभव बैनर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। रविंदर शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूट्यूब पे आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो इसी के साथ ही हम लोग बातचीत का सिलसिला ऐसे ही आगे लेके चलते हैं। अनीता मिस्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर समता शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े प्यार के साथ अपना कमेंट दे रहे हैं, लगातार अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम लोग सारे कमेंट देखने सुनने लग गए तो फिर अपना टाइम है जो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आज मौका है हमारे पास खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब के बारे में सुनने का, ताकि हम लोग उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकें। सब लोग जानते हैं कि अक्सर किसी से भी अगर बातचीत करो तो अक्सर लोग उस्ताद विलायत खान साहब के बारे में ये लोग बताते हैं कि वो बहुत सख्त किस्म के इंसान थे, लेकिन जब वो सितार बजाते तो मुझे नहीं लगता कि उन जैसा कोई इंसान दुनिया में होगा। तो जो सख्ती है अपनी जगह पे, जो उनका आनंद है वो अपनी जगह पे, सख्ती उनकी ये रहती थी कि वो अपने काम में, क्योंकि किसी भी इंसान की अपनी कोई भी काम करता हो तो उसको अपने आप पे एक मान होता है, प्राउड होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो इसको लेके आगे जाना है। और उस्ताद विलायत खान साहब ने एक हिस्ट्री क्रिएट की, एक ऐसा काम कर दिया जिससे मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में उस्ताद विलायत खान साहब कोई और आ सके। तो बस एक ही दुनिया में इंसान रहा है और उस इंसान को हम लोग आज याद कर रहे हैं। तो भगवान कृपा करे, अल्लाह कृपा करे कि ऐसे लोग बार बार इस दुनिया में, मेरे ख्याल हमारे जैसों को छोड़ के कुछ ऐसे इंसानों को अगर बार बार भेजते रहे भगवान अल्लाह ताला, तो मुझे लगता है कि हमारी जो सृष्टि है संगीत के साथ बहुत आनंदित हो जाएगी, बहुत ही अच्छी बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब बहुत ही प्यार के साथ जुड़े हुए हैं। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार ऐसे रखें। तो हम लोग सुनते हैं
खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब की जीवनी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि आज उनको सभी अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। तो फेसबुक, सोशल मीडिया पे भी अलग अलग बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो बहुत सारे सज्जन ऐसे भी हैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए, जो पहले उन प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए थे, अभी सर्वकाल के इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना टाइम निकाल के तो ऐसी महान हस्तियों के बारे सोचते हो, ऐसी महान हस्तियों को आप नमन करते हो, प्रणाम करते हो, ताकि हमारा जो संगीत है ऐसे ही बना रहे और इस संगीत के साथ मिल के, जुड़ के हम आनंदित होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर चलते हैं उस्ताद जी के पास, उस्ताद धर्मवीर जी के पास। जी उस्ताद जी। Thank you, Ji. Thank you. थैंक यू सर। Harjeet ji has highlighted uh, this the qualities of Ustad ji, and I think his personality was a very complex personality, जैसे इन्होंने कहा. तो I think it's important to remember that a musician who's not had the experience of life, ups and downs to an extreme, normally it's very difficult to be chiseled out because life is the best teacher. Ustad ji lost his father when he was 10 years old. 10 साल की उम्र में उनके पिताजी उस्ताद इनायत खान साहब का साया उनके सर से ऊपर नहीं रहा. Ustad ji's whole life, Ustad ji's mother's life, the family's life became a very hard life. And they were in Calcutta in those days. So in desperation, Ustad ji told me the story कि he ran away, अपने घर से भाग गए और इतनी हालत वो हो गई कि भूख लगी हुई, खाने को कुछ मिला नहीं, and he fainted, बेहोश हो गए दिल्ली में. तो दुकान वाले ने पकड़ के उनको कुछ खिलाया पिलाया और पूछा कि तुम कौन हो. So he ended up on the attention of the All India Radio producer, जो कि इनके पिताजी उस्ताद इनायत खान साहब के फैन थे. उनको जब पता लगा कि अरे उनका ये लड़का है, तो बोला क्या करते हो, बोले सितार बजाता हूँ थोड़ा. तो जब उन्होंने उसको देखा सितार उनका, तो बोला अरे बाप रे बाप. तो ही lived in his garage, उनकी गैरेज में उनको जगह दी और वहाँ रियाज करते थे. उस्ताद जी saw very hard times. हमारे सबसे सीनियर गुरु भाई पंडित अरविंद पारक जी, जो कि मेरे उस्ताद की लगभग एज के ही हैं, उन्होंने जो है सारी उस्ताद जी को जितना अप्स एंड डाउन्स में उन्होंने देखा है, हमने तो हमारा स्पैन तो बहुत छोटा है. तो he used to say that he used to live in a shack. उनका जो जिस कमरे में रहते थे वहाँ पे एक संदूक था और वो संदूक उनका ड्रेसिंग टेबल बन जाता था. उसी संदूक में कपड़े रहते थे, उसी को इधर साइड पे किया तो बिछा के अपना सोने का, और एकदम चिथड़ों जैसा मामला in Bombay. And that is the kind of scenes, this man came out. And जब बाप का साया ना रहे तो दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं. तो उस्ताद जी must have gone through lot of hardships and turmoils. लेकिन one thing which is so important is कि जिसको in our language we say sanskar. Now these are impressions of past lives and our gurus and our ustads, which lives in us at the very genetic, deep down level, which makes us. Ustad ji had those impressions, those sanskars, and his lineage belongs to the great stalwarts of the Mewati world. Mewat was a region जहाँ से मेरे उस्ताद के फोर फादर्स ओरिजिनेट होते हैं, और वहाँ के इलाकों में वहाँ के म्यूजिशियंस जो हैं, जितने नामी म्यूजिशियंस हैं, बीनकार हैं, वो उनका कोई ना कोई रिश्ता उस इलाके से बनता है. माय उस्ताद ग्रैंडफादर उस्ताद इमदाद खान साहब was mostly based in इंदौर, और इंदौर के इलाके में
और उस्ताद बंदे अली खान साहिब जो कि एक वो बीनकार, वो एक म्यूजिशियन है जो कि फकीर दरवेश म्यूजिशियन थे। तो सूफी स्पिरिचुअलिटी का वो भाव, वो जो जो जिसको मैं सिर्फ कंटेजियस बोल सकता हूँ इन अ वेरी गुड सेंस, कि वो जो एक वाह। इन लोगों का, फकीरों का, इन इन महात्मा का, वो जो जो इनकी वाइब्रेशंस थी इन लोगों के अंदर, बहुत जबरदस्त ढंग से धसी हुई है। और दैट इज फॉर मी वन ऑफ द रीजंस व्हाई व्हेन दे टच द सितार देयर इज मैजिक। उसको बयान नहीं किया जा सकता, उसको सिखाया भी नहीं शायद जा सकता, उसका कोई कोई वो पैरामीटर नहीं है। इट्स अ वेरी हम्म। स्पिरिचुअल काइंड ऑफ ब्यूटी एंड दैट। एंड उनकी जहाँ पे आपने बिहाग में एक वेरी तान बेस्ड चीज सुनी, तो आइए कविराज से रिक्वेस्ट करते हैं इफ यू कैन सिंग टू अस बिहाग, जिसमें आप देखिए कि उनका जो विचार, उनका जो स्पिरिचुअल थिंकिंग है, और वो उसमें द सॉन्ग इज एक्चुअली talking about the Almighty coming in different forms and different guises to guide us. You know, He comes in all different ways to guide us. इस मौजू के ऊपर उन्होंने बहुत लिया है। एंड इन हिज कंपोजिशंस ही, उनका जो पेन नेम था वो कभी कभी नाथ पिया, कभी कभी इनायत अपने फादर को वो करते थे। और इसमें देखिए आप कितना खूबसूरत भाव है। और द अदर ब्यूटी विच आई फाउंड वाज कि द color, the angle of bihag is very different in this composition compared to what Roopa played before. And ये भी बात सुनने देखने की है कि एक राग is not just a fixed entity. There are many different angles how a musician can see that. Sometimes, if you're watching a cup, depends where you are watching from, sides and all of that. And I'm so happy that Jay Viswadeva is joined also with us. It is thank you to Jay, who used to make possible for my Ustadji to visit England and come and perform. And I had the fortune of being very lucky to be with him, my Ustad, during his visit. So आइए कविराज बिहार की सुनाई चीज। वाह जी। तुम्हारे रूप हम जान पहचान, तुम्हारे रूप हम जान पहचान। वाह। एक ही नहीं रूप में तुम आए हो, पर नाना रूप में आए हो समझाने। तुम्हारे रूप हम जान पहचान, अनाथ के भी अनाथ तुम्ही हो, अनाथ के भी अनाथ तुम्ही हो। आवन गवन किया अंत करो अब, छोड़ के हम सब आए तुमको मनाने। तुम्हारे रूप हम जान पहचान, तुम्हारे रूप हम जान पहचान, जान पहचान, जान पहचान। वाह जी, क्या बात। वाह। वाह।
beautiful. That was beautiful. बहुत अच्छे। मेरे उस्ताद जी जी उस्ताद। का जब when he became associated with Sadhguru Jagjit Singh ji, the relationship was so beautiful कि जिसको बयान करना मुश्किल है। जिस कमरे में ये दो हस्तियां जब बैठ जाती थीं, they used to sit for hours and hours. Music would flow. Sadhguruji would share compositions, Gurbani compositions of old Babis, the heritage of the Gurmat, the Gurbani Sangeet. And Ustadji would sit there and really enjoy वो भावना, वो जो जादू उस शब्द का, and वाह then वाह। reciprocal वो कुछ चीज जो उनको याद आती थी, तो he would sing that back and Sadhguruji would, enjoy that. And then, this kind of game would go on. And what a beautiful relationship they had. यहाँ पे एक चीज what for me was very inspiring was कि my ustad, the history is of a Hindu Rajput lineage. इन लोगों के राजपूत नाम साथ में चलते हैं, इनकी हेरिटेज ऐसी है। एंड इस्लाम उन्होंने कबूल किया, तो म्यूजिशियन होने के नाते धर्म, ये चीजें एक पेरिफेरल इनके लिए थी। उनका सदगुरु जी के साथ बैठना या किसी और महात्माओं के साथ, the interaction was so beautiful, and for them they seem to have transcended. And this is why मैं समझता हूँ कि ये सूफी लोग हैं। सूफियों का जो है वो अलग अंदाज है। तो वाह। और दूसरी बात है कि संगीत, नाद ब्रह्मा, कलमा, जिक्र, ये कुछ कॉमन फिनोमिना हैं जो दोनों दुनिया में पाए जाते हैं। और उस्ताद जी मुझे एक बार कहने लगे, बेटा बड़े बड़े ढंग के साथ एकदम ऐसे देखो, कभी ये मत भूलना कि तुम सितार के पीछे हो, सितार तुम्हारे आगे है। तो थोड़ी देर तो मैं हिल गया कि एकदम से उस्ताद जी क्या कह रहे हैं। लेकिन बात इतनी, what he was trying to say was that music is in front. You are because of music, and never ever think कि music is because of you. वाह। And I think this is like at a very metaphysical level. आप देख सकते हैं कि जो हमको चार तान आ जाती है तो we think, wow, no one can play like me. So our ego asserts. And this was a guidance from a maestro for a Ustad ki never ever forget that the music actually is central. And the other metaphysical angle iska dekhiye ki the vibration, the Naad Brahma, is the cause of creation. Naam, Shabad. Kai isko naam se hum describe karte hain. And he had suggested that is primordial. That is the actual bedrock of creation. And if you start thinking because you get lost in the world that you are because of you are, then the music is gone. And I think there were these beautiful things, and I always loved these kinds of little anecdotes. And my Ustad, I feel somehow that because he saw me that I was that a student who enjoyed that kind of things, he would give it to me. ऐसे लगता है कि वो मेरी guidance के लिए he had come into this world. And I'm sure many of his students, many of his disciples also feel that special relationship which they had with Ustad. So I think let's move forward. I'm going to request Roopa
Roopa, my Ustad ji used to think a composition, a gut, उनका एक particular सोचने का अंदाज था जो in सितार we have a drone string जो चिकारी जिसको बोलते हैं हम चिक चिक आवाज जो आती है चिकारी तो चिकारी पे बेस उन्होंने गत बनाई जिसमें एक चिकारी और फिर दो चिकारी का कॉन्सेप्ट उन्होंने लेके पहले पार्ट में एक चिकारी का यूज करते हैं दूसरे में दो चिकारी का यूज करते हैं और उसको जो उन्होंने शेप दी है वो उस्ताद विलायत खान साहब ही सोच सकते हैं इस टाइप का अंदाज. So Roopa, I'll please request you, don't hurry into it. Please at least demonstrate that stuff 2 or 3 times so that कोई भी चीज जो है वो जरा सुनने में आ जाती है. ऐसे कविराज, if you sing the अंतरा at least 2 times, please do it ताकि we can it registers better. And कौन से राग में सुना रही है? वाह रूपा जी थोड़ा yeah, thank you. So I'll play the composition in Rag Pilu, which demonstrates this concept of using the chikari as Guruji was just mentioning. Wow. Wow. क्या बात.
वाह 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 जी वाह वाह Wow, क्या बात है beautiful. I'd also like to take this opportunity to say adab to Ami, my Ustadi's second wife, who lives in America with Hidayat Hussain, their son. Ami, we remember all the great times you looked after Ustadji in such a beautiful way. Thank you very much for being there. So, Ustadji ki is multifaceted dunya, unka interests in other aspects of life were exemplary also. I remember when I first went to Dehradun, he would have a tailor, a guy who would come and sit in the outside veranda, all set up with this little machine. And Ustadji would sit and with the scissor cut the patterns and डिजाइन करके उसको देते थे और बैठ के वहां पे उसको he would say okay बनाओ इसको. And every time he went on tour on a concert, his kurtas, what he did on his kurta was on the strip, the button strip, he would put different kind of a design, sew it, ask the tailor to do it for him, and that used to become a fashion amongst the musicians fraternity. So he was वाह quite a trendsetter, and उनकी कुर्ते सिलवाना, अलग cuttings करना, all this was something he had. The qualities, I remember walking out of his house waiting for the bus in Dehradun, and this a European lady, I'm not quite sure which country she was, and she saw the sitar in my hand and asked me, do you play sitar? I said, yeah, I play sitar. And so who do you learn? So मैंने अपने उस्ताद का नाम लिया. So she said, oh, I remember him. So मैंने कहा कहाँ से? Well, in Shimla, we used to do ballroom dancing. And Vilayat Khan was very good in ballroom dancing. So आप imagine कीजिए ballroom dancing में my ustad was the champion. वो कैसे pick up करते थे चीज, because by the time he became very famous and well known, his friend circle had expanded and he had all these very royalty type of people become his friends, and he would draw from them, and he had hardly gone to school. In Namita Devi Dayal's book, The Sixth String, she mentions that she used to get 0 in most subjects, and Inayat Khan Sahib was very angry and disturbed, but somehow he realized that this boy was not made for schooling or college and all that, and sitar is and he allowed that. He says, okay, from today, that is what you will do. So in spite of that, unka jo capacity to learn, he spoke English quite fluently, and he used to pick up different languages. He spoke Bengali very well,
उर्दू तो उनकी जुबान थी. And so this capacity, again, this is a musical quality, क्योंकि language is a music. म्यूजिक है, जुबान जो है वो एक म्यूजिक है. एंड उसको उस्ताद जी कैसे पिक करते थे, कैसे वो ले लेते थे. एंड देन in Shimla he was also champion of billiards, जो कि हमारा यहाँ पे पूल जिसको हम बोलते हैं, लेकिन बिलियर्ड्स मुझे लगता है शायद इज अ बिगर टेबल. एंड Ustad used to play that very well. He was the champion in Shimla. And when he visited us in England, he would sit. In those days, there was the Sheffield snooker championships, and he would be glued in front of the television, and he would be lost. He would watch the ball, and he would say, "Now you watch. This is what he's going to do next." He knew every move what they were going to do because he understood the game so well. वाह This is my Ustad. And another thing he loved was cars. And गाड़ी का बहुत शौक था. He was a fan of Mercedes. And I heard that in his younger days he had a Jaguar as well. And he would have a scarf and open Jaguar, open roof Jaguar, and he would go with the style. And kapde unke wardrobe in Dehradun, when we used, saw that wardrobe, he had the best clothes from Oxford Street in London, from Paris, or दूसरे perfumes ka shauq, carpets. He knew the beauty, the finesse of the carpets, his association with the Padshah of Afghanistan, Zahir Shah. He imbibed a lot of these qualities, and they would gift him things. And this was a man who had come off. Again, मैं संस्कार की बात करता हूँ, because don't forget that his forefathers used to be employed in the royal courts of Indore and Gauripur and these places. So Ustad Vilayat Khan साहब एक बादशाह आदमी थे, एक राजा. एक सितार के ऊपर जब बैठ जाते थे तो शेर जो थे वो एक शेर के जैसा उनका रहता था. वाह और जैसे एक स्ट्रोक मार देते थे तो लोगों में एक पहला सा लगाते थे तो वाह जो आवाज आती थी, बस उसके बाद तो उस्ताद जी was magic. He was a magician, जादूगर. इनके पिताजी को बंगाल के जादूगर बोला जाता था. तो विलायत खान साहब शायद दुनिया के जादूगर, सितार के वाह क्या जादूगर बात ही कह सकते क्या हैं बात उस्ताद जी को. तो आइए, लेट्स हियर a very romantic composition. Again, मैं फयाज खान साहब की बात कर रहा था, तो वो इफेक्ट जो है उनकी अमीर की composition है. तो कविराज will sing that. तो आप कविराज थोड़ा सुनाइए. अचानक मोहे पिया आके जगाए. Suddenly my beloved has come and woken me up. It's that sentiment. अचानक मोहे पिया के जगाए. अचानक मोहे पिया के जगाए. मैं तो मन ही मन में धरक थिरक गई. और खींच खींच गरबा लगाए. अचानक मोहे पिया के जगाए. अचानक मोहे पिया के जगाए. मैं तो मन ही मन में धरक थिरक गई. और खींच खींच गरबा लगाए. अचानक मोहे पिया के.
मैं तो आई थी रंग रलिया मनावन, मैं तो आई थी रंग रलिया मनावन, नाथ पिया है तोरे नगरिया में आके पछताई, अब न आऊंगी मैं अपने घर जाए, अचानक मोहे पिया के जगाए, अचानक मोहे पिया के आ अचानक मोहे पिया के जगाए, मैं तो मन ही मन में धरक थिरक गई, और खींच खींच गरबा लगाए, अचानक मोहे पिया के। मैं तो आई थी रंग रलिया मनावन, मैं तो आई थी रंग रलिया मनावन, नाथ पिया है तोरे नगरिया में आके पछताई, अब न आऊंगी मैं अपने घर जाए, अचानक मोहे पिया के जगाए, अचानक मोहे पिया, अचानक मोहे पिया, अचानक मोहे पिया आके जगा। क्या बात है, क्या बात, वाह जी वाह, बहुत अच्छा। जी रूपा वाह, वाह जी वाह जी वाह, रूपा जी क्या बात है। बहुत खूब ਉਸਤਾਦ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਚੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ।
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਾਉਣ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर समता शर्मा जी, रेनू जी, पिंकी कौल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। योगेश जोशी जी जो कि यूट्यूब पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी अच्छी गिनती में लोग यूट्यूब पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही जो अलग अलग पेजेस पे लोग जुड़े हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद ऐसे ही रखें। तो पायल जी भी बैठी हुई हमारे साथ, तो मैं चाहूंगा कि अगर वो भी अपने जो भी उनका अच्छा लगे उसके बारे में जरूर बोले। जी पायल जी। नमस्ते हरजीत जी। जी मैं जी तो क्या बोलूँ, छोटी बड़ी बात पर जो बातें उस्ताद धर्मवीर जी सुना रहे हैं, उस्ताद विलायत खान साहब की, वो बहुत ही अच्छी लग रही है। और जो एक बात जो मेरे दिल को बहुत छू गई, जो उन्होंने बताई कि सितार म्यूजिक तुम्हारे आगे है और तुम सितार के पीछे हो। सो इट्स सो ट्रू कि हम जब कुछ काम लेके आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं, पर जिस वजह से हम ये काम कर रहे हैं वो चीज़ जो है वो बहुत बड़ी है, उसके क्या मायने है। तो ये हम सबको इससे सीख मिल रही है कि ये चीज़ हमें किस तरह इस चीज़ को हमें आगे लेके जाना है और हम कैसे इससे सीखे। तो उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें उन उस्ताद जी की बता रहे हैं। What a humble man he was। जैसे आपने बताया कि you felt so personal, कि ये उस्ताद जी को सिर्फ मेरे लिए भेजा है कि मैं इनसे सीखूं। And I'm sure everybody who he touched their life felt the same way, and that is the beauty about a godly like personality। And Ustad Vilayat Khasam jo lucky for people who had come in his life, और उनकी बातें हम आज सुन रहे हैं। So thank you so much for sharing this। And what can I say? वाह Time I listen to Kaviraj, the beautiful renditions and the songs that he's singing, it just brings a big smile on my face। जैसे आपने बताया कि अभी स्प्रिंग शुरू हो रहा है और ऐसा ही फीलिंग हो रहा है कि जैसे फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं। So Kaviraj, you're singing so beautifully, and when I listen to Roopa ji, resonating the same rag or the songs that you just finished renditioning, it just sone pe suhaga ho jata hai ki wow, क्या बात। how beautifully that strings are resonating the vocals that you have just produced। And as I said, I'm not I'm a music illiterate, but from what I can hear and what I am experiencing is just mesmerizing। So thank you so much to both of you for giving us this pleasure this morning। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी, बहुत ही आपने प्यार के साथ अपनी बात रखी। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बड़े प्यार के साथ इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं आप। और जैसे आज उस्ताद विलायत खान साहब की जीवनी, उनकी गतें, उनका जो सिखाना अपने शागिर्दों को रहा, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम लोग सुन रहे हैं। और हम बहुत ही लकी हैं कि उनकी जो बातें हैं, कुछ ऐसे सज्जन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी अभी यूट्यूब से किसी ने लिखा है, उनकी जो नाम तो नहीं है, उनकी जो आईडी है श्री फ्लूट है, उन्होंने लिखा है कि उनको मौका मिला मुंबई में खान साहब को सुनने का, और कितने खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिन्होंने खान साहब को सामने बैठ के सुना। बहुत बहुत शुक्रिया अपने जो आपने लिखा है इसके लिए श्री फ्लूट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬੂਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮਹਿੰਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੀਰਜ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੂਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਰਵਿੰਦਰ ਕਟੋਟੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰ ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤਿੰਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਨਾਮ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅਲੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਰਵਿੰਦਰ ਕਟੋਟੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਵਿਲਾਇਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਵਿਲਾਇਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਰੂਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਜਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਹਨ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਰੂਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਰੂਪਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਰੂਪਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੋਇਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੇ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰੁਝੇਵੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ another thing which I remember my Ustad ji saying in an interview which is published on the television, it came, and he marks an experience of a musician where he says कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं अपनी बॉडी से निकल के ऑडियंस में बैठा हुआ हूँ और अपने आप को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और कह रहा हूँ कि यार अच्छा लग रहा है। अब आप ये इशारा जो है, ये
इशारा है कि जब म्यूजिशियन अपना आप खो देता है अपने वाह काम में, काम करते करते मैं की मैं रही सुध न रही, ता उस वक्त जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मिल जाते हैं तो क्या रहता है? ओनली अवेयरनेस, ओनली कॉन्शियसनेस, और वाह वो हमारा असली रूप है। ओमकार सतनाम, अकाल अमूरत, मतलब ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਚੈਤन्य, consciousness, and that is all what remains, and that is a amazing place to be. And I think this is where great maestros used to touch those spaces, and they had the taste of that. So I'm very interested in another composition Ustad did, and having grown up in the Punjab, in the Sikh Gurbani world, I came across that the picture of the Basant in the Sikh वाह tradition is very similar to Ustadji taught me, but he taught me under the name of Pancham, I think, which is a creation of the Agra musicians. Like when you look at the Swaroop and the notes, it's exactly like Basant. But usko unhone hame Pancham ke naam se he taught. And if Kaviraj could sing, "He mukh dekh nand ko anand bhayo," and देखो एक वाह मुस्लिम म्यूजिशियन है, कह रहा है कि मुख देख नंद को आनंद भयो, नंद कृष्ण दा रूप मुंह देख के मनो आनंद विभोर में हो यहाँ। देखो वाह क्या बात सुनिए। वाह जी वाह सर मुख देख नंद को आनंद भयो, मुख देख नंद को आनंद भयो, मुख देख नंद को आनंद भयो, मोरा दुख दरिद्र सब हरन भयो, आहा मुख देख नंद को आनंद भयो, मुख देख जित जित और इनायत कीनो, जित जित और इनायत कीनो, उत सब और सुगंध भयो, मुख देख नंद को आनंद भयो, मुख देख नंद को आनंद भयो, मोरा दुख दरिद्र सब हरन भयो, मुख देख नंद को आनंद, जित जित और इनायत कीनो, जित जित और इनायत कीनो, जित जित और इनायत कीनो, उत सब और सुगंध भयो, मुख देख नंद को आनंद भयो, मुख देख नंद को आनंद, नंद को आनंद, नंद को आनंद भयो। वाह 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 क्या वाह Hmm. वाह वाह Beautiful, Kaviraj.
मुख देख नंद को आनंद भयो, बहुत खूबसूरत माहौल, पंचम जहाँ बसंत, बुढ़ा बसंत भी, this rag has been called. And I feel that my heart is so full of all the beautiful melodies, the beautiful strains, and my good fortune to sit with Ustadji on the stage when he used to perform on his side, sometimes play the tanpura, sometimes just be there uh, as an honor of being his shagird, his student. My thank thank you, thankfulness to our Buzurgs, our Gurus, Sadhguruji, for picking me up and putting it in the lap of Ustad Vilayat Khan Sahib. I feel very fortunate that Ustadji's blessings have been with all of us. All our students are carrying the same blessing and those beautiful vibrations of Ustadji. My Ustadji's performance would never end without Rag Bhairavi. His Bhairavi was just amazing, and I think that his CD which he recorded for Lyle Wachowski in New York, in which he just played Bhairavi, the whole CD is a pinnacle of his research on different shades of Bhairavi, a rag which is probably found in every part of the world. Our global rag hai, Rag Bhairavi, and I feel that this is what we would like to leave today's session. If Harjeet ji, आपको कुछ कहना है तो मैं चाहूँगा कि कविराज उनकी भैरवी थोड़ी he will sing, and then Roopa will finish it off with a जी, bhairavi on the sitar. So क्या बात। if you allow me, so thank you very much, Sarb Akal Society, for having us and remembering Ustadji together on this day. He left us in 2004, 13th March. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। आप जी ने बहुत ही प्यार दे नाल उस्ताद वलैत खान साहब दे बारे जानकारी दी। अज दे सारे बहुत सारे सज्जन दोस्त और जो सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ दिल्ली के साथ सर्वकाल लाइव टीवी प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत रहे आज हमारे साथ जैसे ही उस्ताद जी, उस्ताद धर्मवीर सिंह जी, रूपा जी, कविराज जी, पायल जी जुड़े, तो उसके साथ ही बहुत सारी जो संगीत को प्यार करने वाली संगत स्टिल ऐसे ही जुड़ी हुई है जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ था। उन सब का सर्व अकाल की तरफ से और आप लोग उस्ताद वलैत खान साहब के इस प्रोग्राम में जुड़े, आपको अल्लाह ताला भगवान वाहिगुरु कृपा रखे और सबको ऐसे ही संगीत के साथ प्यार बख्शिश करे। अभी एक बात कही थी उस्ताद जी ने कि एक मुसलमान आर्टिस्ट लिख रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में, तो जहाँ पे बात आती है संगीत की, इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया का अगर सबसे प्यारा कोई मजहब, कोई धर्म है, वो संगीत है, जो किसी को इन चीजों में नहीं बांटता कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं। तो हमारा ये बड़ा प्यारा जो मजहब है, धर्म है, संगीत, इसके साथ ऐसे ही जुड़े रहें, तो एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहें। और संगीत हमारा एक ही चीज बांटता है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। संगीत का आनंद लें और अंत में हम लोग रूपा जी और कबीर जी को सुनेंगे और ऐसे ही बहुत सारी गलतियां होगी प्रोग्राम करते हुए, गलतियां सारी हरजीत सिंह की झोली में डालिए और जो आनंद है उस आनंद को अपने साथ रखिए, ताकि आने वाले टाइम में इस आनंद से हम लोग और आगे जाएं और भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। पायल जी, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी आप? जी। Thank you so much to Ustad Dharambir ji, Kaviraj ji, and Roopa ji for doing a special presentation today.
We are thankful कि आप लोगों की वजह से हम सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी इस तरह के प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं. So thank you again for giving the beautiful insight on Ustad Vilayat Khan Sahib, and may his soul rest in peace. As you mentioned, today is the day he left us, but he left the gift of music behind, and we're still, you know, privileged to be part of that and carrying forward. Thank you to Kaviraj and Roopa ji for as a next generation, being a torchbearer of Indian classical music and carrying forward. So thank you again for all of your contribution to Indian classical music, and we hope to be connected and stay in touch just like so as today. और सभी दर्शकों को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप हमारे साथ इतने प्यार से जुड़े रहते हैं. So again, we look forward to presenting beautiful shows and you know, talks like this in future. So thank you everyone. वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया पायल जी. डॉक्टर समता शर्मा जी ने एक बहुत प्यारा कमेंट लिखा है रूपा जी आपके लिए. तो आपको ऐसे ही बाबा जी कृपा रखें, आशीर्वाद देते रहें. तो गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ ऐसे आगे जाते रहें. तो कविराज जी बहुत बहुत धन्यवाद. आओ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ. तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता, रखियो लाज मोरी नाथा, रखियो लाज मोरी नाथा, तुम हो जगत के दाता, जो बना लुटाए बैठी कौन मुख जइयो, जो बना लुटाए बैठी कौन मुख जइयो, कौन मुख जइयो, जो बना लुटाए बैठी कौन मुख जइयो, हो तुमरे पास आवन को मनवाल जात, ओ तुमरे पास आवन को मनवाल जात, तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता.
बहुत So beautiful. बहुत क्या बात क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बड़े प्यार के साथ आपने इस प्रोग्राम का आनंद लिया और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे साथ उस्ताद धर्मवीर सिंह जी, रूपा पनेसर जी, कविराज सिंह जी ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਪਟੇਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ उस्ताद विलायत खान साहब की जीवनी के बारे में बातचीत हुई है। बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग मिलेंगे अगले प्रोग्राम में बहुत जल्दी और कोशिश करेंगे उस्ताद जी को दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि क्योंकि लालच होता है तो उस लालच को, अच्छे लालच को आगे लेके जाना चाहिए। तो उस्ताद जी से और हम लोग कुछ सुनेंगे अगले प्रोग्राम में, कुछ उनसे जानेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। रूपा जी कुछ शब्द कहना चाहोगे तुसी तो जरूर कहो जी। रूपा जी। Thank you so much, Harjeet ji. Thank you very much, Guru ji. थैंक यू जी। कविराज जी। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सबको। हम बहुत वी फील वेरी लकी कि हमारे लाइफ टाइम में उस्ताद विलायत खान साहब के प्रोग्राम्स वगैरह देखे। और मैं खुद उनके पास मैं जब छोटा था, 6 साल का था, हम लोग एक हॉलीडे पे गए। और उनके पास हम लोग रहे, मैं और मम्मी पापा। मुझे बहुत उस टाइम में इतना पता नहीं था कि उस्ताद विलायत खान साहब कौन थे, पर अब जाके पता लग जाता है कि
वो एक जितने जितने बड़े हस्ती हैं और कितना मतलब हमको उनके आशीर्वाद है। और बस सबको थैंक यू। थैंक यू और हरजीत जी थैंक यू आपका। बस थੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਗਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ संगीत ਦਾ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। और अभी थोड़ी देर में आपको एक बहुत प्यारा प्रोग्राम जो कथक डांस का सुनने को मिलेगा बहुत जल्दी, 10-15 मिनट के बाद। तो आप ऐसे बने रहिए, संगीत का आनंद लीजिए और संगीत करने वालों को आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।